Very good morning to my lovely Patans. I hope you all are fit and fine. Okay, in the last class we had done the worksheet 1 of page number 104. So today we'll do the worksheet 1 page number 105, which includes difference between the following and the question answers. So everyone just take out your computer notebooks and books and your stationery and we'll start the worksheet given on page number 105. Okay, so let's start. So today we'll do the worksheet 1 which we were doing in last class also. So today we'll do the page number 105 of worksheet 1. Okay, so first is difference between the following: desktop computer and laptop computer. So the first difference is your desktop computer is big whereas a laptop computer is small in size. Okay, so we'll write here a desktop computer is big in size whereas a laptop computer is small in size. Now the second difference: desktop computer is heavy in weight whereas laptop computer is lightweight. डेस्कटॉप कंप्यूटर का वेट ज़्यादा होता है और लैपटॉप कंप्यूटर का वेट कम होता है. सो राइट डाउन इट इज़ heavy in weight whereas laptop computer light in weight. Now the third difference is desktop computer is difficult to carry from one place to other whereas laptop computer can be easily carried from one place to another. डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर को हम ईज़िली कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. ओके, सो विल राइट हियर इट इज़ difficult to carry from one place to another whereas it can be easily carried from one place to another. Now the fourth difference is desktop computer is a type of microcomputer. So it is a type of microcomputer whereas a laptop computer is a type of mobile device. It is a type of mobile devices. Okay, so this is the difference between desktop computer and laptop computer. Now come to the second one.
Second is theme and wallpaper. So we'll write so here we'll write theme wallpaper. Okay. So theme क्या होता है? Theme is a color or style scheme that affect not only your wallpaper but the font size and effect of desktop and other items present on it. ये सिर्फ आपके डेस्कटॉप के वॉलपेपर को चेंज नहीं करता, बल्कि जो कलर स्कीम होती है आपकी विंडो का कलर, स्टार्ट मेन्यू का कलर, ओके, इट चेंज ऑल दोज. So we'll write the answer here. Here we'll write a theme is a just write down a theme is used to change the color scheme the font size and effects of desktop and other items present on it. Okay. This is font. Now wallpaper is what? A wallpaper is the background image of your desktop. So we'll write here a wallpaper is the background image ऑन आर डेस्कटॉप. तो जो आपके डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज होती है उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं. ओके. और थीम में क्या होता है? थीम में आपका वॉलपेपर भी चेंज हो जाता है, कलर स्कीम भी चेंज हो जाती है, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाता है. फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ आप जो ये टेक्स्ट टाइप करते हो इसका साइज़. ओके. So this is the difference between theme and wallpaper. Now come to the next. Answer the following. Okay.
First one, what do you mean by mainframe computer? What do you mean by mainframe computer? Write its characteristics. Write its characteristics. Okay, so now we'll write the answer. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर एंड दे हैज़ द कैपेसिटी टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं. एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM कंपनी. ओके, ये सबसे पहले IBM कंपनी ने डेवलप किया था, इसको बनाया था. नाउ first we'll write here mainframe computer is large and powerful computer it has the capacity to host multiple operating system and it was first developed by IBM. Now characteristics. First, it is large in size. Second, it can process millions of instructions per second. एक सेकेंड में ये millions of instruction को process कर सकता है. It can process millions of instructions per second. Third, it is mostly used for scientific research and doing bulk mathematical calculation. Scientific research के लिए यूज़ करते हैं और जो mathematical large calculation होती हैं, बड़ी calculation होती हैं, उनको calculate करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. So it is mostly used for scientific research and doing bulk mathematical calculations. Okay. Now the second one.
What is the function of disk drives? Give its examples. What is the function of disk drives? Give its example. So we'll write the answer now. Disk drives are used for storing data, instructions and information for future use. सो फ्यूचर यूज़ के लिए हम अपने डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइव्स का यूज़ करते हैं. एंड सम ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन, और कुछ ड्राइव्स हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए. एंड सम आर यूज्ड फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन. Example: hard disk drive, CD-ROM, DVD drive and Blu-ray drive. So these are the example of your disk drive. Now the third one, what is the purpose of using multiple desktop? So multiple desktop को use करने का क्या purpose है in Windows 10? What is the purpose of using multiple desktops in Windows 10? So we'll write the answer. The purpose of using multiple desktop in Windows 10 is that it allows us to open different programs in each virtual desktop. जो भी हम डेस्कटॉप न्यू डेस्कटॉप ओपन करते हैं उसमें हम अलग अलग प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और उनका अच्छे से हम रिकॉर्ड भी रख सकते हैं. So we'll write here the purpose of using multiple desktop is that it allow us to open different programs in different desktops. And we can keep track of each one in detail. और हर एक का हम ट्रैक रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं डिटेल के साथ. So this is the purpose of using multiple desktops. So everyone just complete this question answer in your computer notebook and revise them also. Okay.
this worksheet and your 3 chapters will come in EV1. So revise them properly. After this we'll start the revision and we'll keep doing our next syllabus as well. So complete it, and if you have any question, any doubt, we'll discuss in the live session. So till then, just take care, stay safe, stay healthy. Thank you.